आज हम लोग आए हुए हैं मिस्टर संजय बख्शी, जिन्होंने बहुत दिनों से डोबरमैन ब्रीड कर रहा है एंड इन्होंने जजिंग भी कर ऑल ब्रीड जज भी है। तो इनसे आज पर्टिकुलर डोबरमैन ब्रीड के ऊपर बहुत कुछ हम लोग जान पाएंगे। एंड संजय बख्शी को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि डॉगीज लाइफ को टाइम दिया है आज। तो वेलकम टू डॉगीज लाइफ सर। तो Thank सर, you. हाँ सर, ये आपका डोबरमैन ब्रीडिंग आप सर कब से कर रहे हो सर? माय फर्स्ट डोबरमैन, हमको पहला डोबरमैन है 1986 अच्छा। when I was in class 12. After that, and this is the first doberman माने जिसके बारे में I was novice, but after that this doberman gives valuable knowledge about the treatment and the breeding. First, here there is no scope of studying genotype. So better to go for phenotype. A good, well, healthy dog is the best choice. Then in 1998 or 2005, हमका डोबरमैन है चैंपियन ब्लशिंग गर्ल. She won many prizes. She won Best in Show, 8th Best in Show, 3rd Best in Show, Best of Breed, and I bred that beautiful girl with Baden Xavier. From this, we have a good progeny of Doberman. One male is superb, but it was mishandled by some owner, so the puppy was destroyed basically. Kintu the breeding was very successful. After that, I owned from breeder. Everybody knows the breeder Michael Lu. From Michael Lu, I owned this male, that is pet name is Jet, and that is also champion Doberman, champion indispensable, Marlin's indispensable. It did a lot to me. From it has bred, it has met a beautiful female, produced beautiful puppies. And from in that way, I am getting pleasure day by day by Doberman. Now I have a female of that Jet, my daughter of Jet, daughter of champion Marlin's indispensable. Now registered show is not available due to COVID-19. Hopefully we are getting soon to recover from the COVID-19, and we will show with my new daughter, that is Daisy. और सर, ये डोबरमैन में दो टाइप होता है, एक अमेरिकन एंड यूरोपियन। तो ये दोनों जो टाइप्स है, बेसिकली सर डिफरेंस क्या है? American type is basically a aesthetic type. If you are a good artist, you can choose a Doberman from America or Argentina. But European Doberman has a massive substance. The head and muzzle is bigger, and they like somebody like European, somebody like American. American now all the world, माने ये जो अमेरिकन डोबरमैन है ये राज कर रहा है वर्ल्ड में. लेकिन यूरोपियन कंट्री में, और दोज हु आर FCI जजेस और दोज हु आर कमिंग फ्रॉम यूरोप टू जज डोबरमैन, दे प्रेफर European Doberman. Maybe in 2006 there was a specialty in Doberman held at Kolkata, held at Salt Lake in Kolkata, and the judge was the owner of Nillandstand. Okay, and there was beautiful Doberman shown, and some Pancholi brought two European Doberman, one dog and other was the bitch. There was also Doberman of Javinder Singh Pawar, Charleston Yankee, and our favorite Doberman in Kolkata, Baden Shara. But in that competition, we observed the judge had given the first prize to the European Doberman dog,
Second was the female of European, and third was Charleston Young. And the placement of the Baden Sara is just 5th or 6th. So they, when Lillestrøm owner clarified why this is the Sara's positioning, he declared that the neck is exaggerated neck. In the working trial, the beach hurt itself by her neck. That is the minus point. So there are several categories: working ability, aestheticism, show manner, everything is involved, and there is a comparison between European and American. But as a dog lover, I love both, European also, and today our Indians are eager to see some European Doberman. And they sometimes bred European with American, European with Argentinian to develop the substance, to develop the head and muzzle, everything. तो सर ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए सही है क्या ये ब्रीड डोबरमैन? Definitely, in the Doberman which has the American line or Argentinian line, they are very, very domesticated. The rumor of Doberman that is on the past is vanished. If you are a hard worker, if you give exercise to your Doberman, the energy, the calorie he burns or she burns, and that makes a Doberman beautiful companion dog. ओके एंड ये जो आपका सर डोबरमैन है, डोबरमैन में आपका पहले जितना आपका पावर था, जितना आपका उसका जो उसका कैरेक्टर में जो आपका ये था, तो अभी का डोबरमैन में वो हेल एंड हेवन डिफरेंस सर क्यों है? That is one of the reason that now the family is also scattered family. We are also scattered family. Now we are joint family, but there are some unit family. They own the flat, they purchase a flat, they want to take Doberman as their pet. So they convert the Doberman into a domesticated animal. But in the past, there are Dobermans, maximum they are coming from European lines. Their aggression is greater. Their aggression, their energy, their power, their substance. But now the Doberman is aesthetic. Now you can see a Doberman with a beautiful eye, and now a Doberman is a purely home breed, purely domesticated animal. तो सर एक हॉलीवुड में मूवी है 7 डोबरमैन एक बैंक को डोबरमैन गैंग या तो सर वो मूवी हमने बहुत बार देखे हैं और सर हाँ तो सर ये डोबरमैन ट्रेन कैसा होता है? They are beautiful trained, but if you say regarding narcotics, they have a tendency to put his leg to the bomb or something. Otherwise, they are beautifully trained. They are they are also trainable to Surjun. Everything. We Indian do not imply the Surjun training now, but we are definitely in future we are giving Surjun training. Everything. They are very trainable, very trainable. और सर बाहर में जो एक बाइटिंग ट्रेनिंग होता है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? मतलब इंडिया में no, that is not the matter. इंडिया में पॉसिबल डेफिनेटली है, but Indian people are crazy for showing dogs, only showing dogs. They in this way we have lost the credential of a Doberman, their working ability. If a Doberman bite is missing, then it is not qualified for the championship show. In Europe, in America, everything. But in India, we are the third world, and here the population is vast. So we taking least care about our breed, Doberman or any breed. So if we are involved totally in the breed, we definitely, there must be training of working trials, there must be training of Surjun training, everything should be there, and working trials, working ability must be increased regarding working group. And sir, first time जो डॉग ओनर है वो अगर कोई अच्छा ब्रीडर के पास आएगा, चाहे आपका अमेरिकन लाइन का ब्रीडर हो चाहे यूरोपियन लाइन का ब्रीडर हो, तो वो जो पेपर्स देखेगा मदर फादर का, उसमें कुछ मेंशन होता है कि ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है? वो बेटर, इफ ही इज ए नोविस ही कांट अंडरस्टैंड.
Okay. But if he is a experienced, but if he is guided by some experienced person, then he know Del Nashi canal is from European canal. Nilastang canal is from Firehurst canal from European. Baden canal from Argentina. Black Shadow canal is from Argentina. Foxfire canal is from America. So developing experience and knowledge give him them which is American, which is European. तो आपको ये लगता है ना, अगर किसी अगर पर्टिकुलर मेंशन कर देगा कि ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है, वो अगर पेपर में भी अगर मेंशन रिफ्लेक्ट करे तो हाँ। ज़्यादा अच्छा होगा, नॉविस के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ये पर्टिकुलर कैनल वो कैनल, ये आप लोग ही बोल सकते हो कि भाई ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है। फर्स्ट टाइम ओनर ये समझ के बाद नहीं समझ जाएगा, लेकिन उसको बताने के बाद उसको दिमाग में घुस जाएगा कि ये ठीक है, ये यूरोपियन, सपोज ERO एंड सपोज USA, सपोज ARG अर्जेंटीना, दैट इज गुड, दैट इज ए गुड। और सर बहुत सारा जो लोकल ब्रीडर है जो आपका ब्रीड स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करता है, वो अगर मान लो अमेरिकन एंड यूरोपियन अगर मिक्स कर देगा तो उसमें जेनेटिक फॉल्ट्स या डेफिनेटली देयर विल बी क्लोज ब्रीडिंग। Many breeders do, suppose they get a good result from a close breeding, then they repeat it many times, and in this way, suppose one puppy is better and other rest of the puppies are not up to the mark, there are genetical problems, they are epilepsy, they have missing teeth, their eye problem, hip diplegia problem, everything is there. So in this way, breeding is an art. Breeding, it depends on the studying science, and a good breeder must study what is the genotype, what is the phenotype. After that, they will definitely go for breeding. Otherwise, keep a pet, take him full care, give him exercise, and that's it, the last thing. और सर ये जो आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोल रहे हो, ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सर क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में? Genotype means that is internal, that is depends on gene, and phenotype the बाहर का जो आकृति है, the external structure of a dog, that is called phenotype. So we maximum people are go for phenotype because we do not have the scope in India to study genotype. Definitely there are some Wikipedia, there are some internet, there are everything is there. What is genotype, how it is be applied, everything is there. But in practical sense, you have to study hard, and you have to years for years to learn the thing which breed is going to breed by myself. That is that depends on genotype and phenotype. जी जी। और सर पहले मतलब 8-10 साल पहले जितना गवर्नमेंट का मार्केट में डिमांड बोलिए, जितना अच्छा ब्रीडिंग बोलिए होता था, अभी उतना क्वालिटी ब्रीडिंग पूरा इंडिया में उतना अच्छा नहीं हो रहा है। एज पर अगर आप पीछे जाओगे तो ये क्यों हो रहा है ये? If you are a money making person by breeding, then the breed is going to be destroyed. And if you are looking for a good breeding, in south there is some good breeding is there. In Kolkata there was, but today there will be a diminishing, there will be decreasing. But if you are a honest man, if you are not a money making man by keeping dogs, then there will be some solution. Otherwise there will be no solution. तो ये फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर कोई अगर अच्छा ब्रीडर के पास जाएगा तो वो बच्चा मतलब कैसे देखेगा, क्या मतलब उसका हेल्थ? First he should notice the healthy puppy, and the puppy is coming to you with their tail is tagging. Okay, the puppy is free from some anxiety, the puppy is free from any skin problem, any rashes, and if you see the healthy puppy, then that is the first reason you should take a healthy puppy. After that you should go for if you take a male, go for check the testes, then check the teeth dentination, whether it is a scissor bite or reverse bite, or if there is any problem in bite. And so in my opinion, a puppy should be sold after 3 months. ओके।
लेकिन ये तो सर इंडिया में कम बहुत हो सारा ब्रीडर नहीं करते हैं, नहीं। क्योंकि 40 डेज 45 डेज में ही ये ये वो लोग- सेल आउट कर देता ये है। लोग सेल कर देते हैं। और ये जो आपका डोबरमैन का जो ब्रीडिंग है, तो इसको और कैसे प्रोग्रेस किया जा सकता है इंडिया में? If you are a good breeder, you have to import some good Doberman, and there will be a problem to import now in India. So import at some days ago there will be a lot of imports are there, but now the restricted import Doberman is there. So breeding is also restricted. Some A, some B, some C Doberman is there. They are from imported line that is imported from Argentina, imported from America. That's otherwise. If you, that's the main reason. You should study the science, you should study the genotype, you should study the phenotype, and then go from BI, from Breeding India, you can also produce a good Doberman. और सर बाहर में एक तो जो है आपका एक सीमेंट बैंक होता है, जो आपको अच्छा अच्छा ब्लड लाइन collect करता है। कलेक्ट हाँ। आपको वहीं से मिल जाता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ प्लान क्यों नहीं किया गया अभी तक? In Chennai there will be some serum bank, sperm bank. In Chennai, in Calcutta there is nothing. The saddened thing is that out of West Bengal, you find there are 4 to 5 veterinary hospital, but in West Bengal there is only one. So if you spread the science, you spread to collect the semen, form the sperm bank. There, that is the foremost thing, that a man should study the dog. माने इधर क्या हो रहा है, they are keeping dog, forgetting everything, giving practice, giving some food, okay, that's fine. But if you study the dog, if you take some, spend some time with the dog breeding, then some things are there, that good sperm bank. There will be a wish to do the better thing. एंड सर ये जो आपका डोबरमैन है, इनका खान पान आप लोग क्या देते हो? To me, from puppy to at least 16 months, I used to give some good quality dry food, chicken or beef, whatever preferable. Now I give chicken, and after that I stress to amount of meat and carrot, some vegetables, rice or chapati, and curd, dahi, and that's enough. That's enough. If you give good exercise, give him enough meat means according to body weight, according to size, he will get the result. और सर एक बात है, ड्यू टू फूड हैबिट, मान लो जो चिकन यूज़ कर रहा है, चाहे कोई ड्राई फूड यूज़ कर रहा है, तो चिकन में बहुत ज़्यादा आपका स्टेरॉइड यूज़ होता है, एंड आपका जो डॉग फूड होता है उसमें आपका एक प्रिजर्वेटिव होता है। तो पहले क्या होता था, साल में 2 बार आपका हीट सीजन आता था एक फीमेल का। तो अभी अगर आप पूरा गौर से देखोगे तो कुछ डॉग में ऐसा होता है 8 महीना 10 महीना में सीजन आ रहा है, मतलब साल में 1 बार हो रहा है। ये क्या फूड हैबिट की वजह से हो रहा है या I think it is not, because a healthy dog, that means include their heavy exercise, at least 1 hour and 15 minutes he or she will exercise by throwing ball, giving swimming, and giving proper balanced food. A female will definitely, there will be no problem in season. In town area or in city area, we enclose the energy of a dog, giving food, everything, but the lack of exercise is the main reason, I think. मतलब उसका जो एनर्जी है, एनर्जी को ड्रेन आउट करना चाहिए, फिर से एनर्जी चार्ज होगा। अच्छा, तो ये जो एनर्जी, देखो बहुत सारा लोग जो डॉग तो ले आते हैं, लेकिन उन लोग के पास टाइम नहीं होता है कि वो एक्सरसाइज कराए, जो एक कराए, तो ये वजह से तो ब्रीड का प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली
एवं ये देखिए कुछ लोग ब्रीड वो डॉग को दे देता है कि भाई हमको आई डू नॉट कीप द डॉग, आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द डॉग बिकॉज दे डू नॉट गिव द टाइम. दे गिव, सपोज इफ आई हैव ए चाइल्ड आई गिव द टाइम, I definitely give the time. So if I take a puppy, he or she is also just like a child. So I or we, those who are treat him as a child, should give him time. Otherwise, better to not keep a dog. See the dog, others, and take. और सर एक तो कहावत है ये डोबरमैन का स्किन एलर्जीज बोलिए, स्किन इशू कुछ होता है क्या? And definitely there will be a skin issue. But in my opinion, those who are Doberman with black and tan, they have relatively इसमें स्किन इशू कम है. लेकिन those who are brown issue, that is a liver color, red and rust, that it is स्किन इशू उसका ज़्यादा होता है. इसके मतलब है सपोज you are a very suppose there is a European, they are bright in colors, sun rays they do not shoot, but a Negro shoot the sun rays. But there will be other allergies also, so water allergy, food allergy. So allergy is a cause of the skin disease. And I also said if you give him proper medicine for deworming, and if you give a routine deworming and proper some medication, suppose vitamin, suppose calcium, not for long, but suppose 15 days, off 7 days or 10 days, then repeat in this way. And there are some good shampoos also, that is anti-allergic, that is curable some skin problem. You can use it and you will save the skin problem. एंड डोबरमैन तो उसका तो हाइट माइट बहुत अच्छा होता है, और बहुत सारा लोग होता है क्या खाना ज़मीन पे दे देते हैं, उसके वजह से वो उसका हाँ डिस्प्लेड हो जाता है. हाँ तो ये मतलब कैसे इसको रोका जाए? That depends on knowledge. If you suppose I am a novice owner, you are an experienced owner, you should guide me. It's better to give him some height. That is the way. एंड इसका पीछे का जो पिस्टन है, तो पिस्टन का कुछ प्रॉब्लम आता है? Yeah, definitely there will be some hip dysplasia problem. In India, there will be no rectification, whether it is a hip dysplasia free, whether it is a elbow, any problem in elbow free, there will be no diagnosis. So we have to take a risk. If there is some hip dysplasia problem, there is some hip dysplasia tablet, there is some treatment. But hip dysplasia problem is a major problem. तो ये हिप डिस्प्लेसिया आपका स्टार्टिंग में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है? बाद में आ सकता है. After 3 months you can find the hip dysplasia. After 4 to 6 months you can find some epilepsy problem. Some problem is there when you have to take a risk in India. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होने का कुछ चांसेस है क्या? Chances are India should develop their mentality. India should develop regarding the treatment of Doberman, not only regarding the dog, and should be scientific in every approach. एंड पर्टिकुलर आप अगर बंगाल में देखोगे पर्टिकुलर अच्छा एनिमल का ट्रीटमेंट करने का जगह भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है. Definitely there is one hospital. There are a lot of private clinic, but they are not always useful. There are a lot of private clinics, but you do not get a doctor of dogs, only purely for dogs. Lot of doctors are there, but they are not expertise in dogs. अच्छा, और सर कुछ दिन पहले AKC का एक जर्नल में आया था, पर्टिकुलर जो ईयर क्राफ्टिंग होता है, जैसे डोबरमैन का हो या ग्रेट डेन का हो, ये आपका वो लोग एनिमल क्रूएल्टी में अभी वो लोग पकड़ रहा है. हाँ. तो ये इंडिया में तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं अभी तक नहीं है. इंडिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, यूरोपियन कंट्री में कुछ है, USA में अभी लागू नहीं हुआ है. तो दैट इज समथिंग अ कॉस्मेटिक सर्जरी. In India, if suppose your denture is not good, we are going for some cosmetic surgery. That is some dentist, good dentist, than cosmetic surgery. That is a cosmetic surgery, and that is look more elegant than the pendulous ear. That's why we are going to do this. तो आपको ये क्या लगता है, ये होना चाहिए आपका नहीं होना चाहिए? That depends on mentality.
our eye shoot this. If you suppose I am wearing some tracksuit and a genji, your eye is shooting for the some dhoti or punjabi. You do not like this. That is the eye shooting. We are involved in that. What is that? Is a cropped ear. That is a dog tail. And but in Europe they are acquainted with the long tail, pendulous ear. तो सर ये जो आपका डोबरमैन है, अगर बीआई डॉग होना अगर होगा तो उसका पार्ट्स इंडिया में लगभग कितना रेंज तक मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से विदाउट क्रॉपिंग 35 to 40 में मिलना चाहिए. एंड इफ इट इज क्रॉप्ड बाय समवन देन इट इज गोइंग टू बी, एंड इट इज मोर देन 3 months, देन इट इज मे बी 70 to 80, 75. एंड ये जो ईयर क्रॉप जो होता है होने के बाद उसका तो मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता है. Definitely, माने you should be knowledgeable. Otherwise, you should appoint the person who make the taping with everything. Taping is an art, and taping is a खूब delicate thing. If you give a proper care regarding taping, then the ear should be hanged. ओके. एंड इसका तो पर्टिकुलर ड्रेस के बाद उसका ड्रेसिंग भी होता है. हाँ, ये तो ड्रेसिंग तो होना जरूरी है. सपोज इट इज ऑपरेटेड सम डे, आफ्टर 7 to 10 days द सिलाई करना है. सिलाई करने के बाद उसको बैंडेज करना है. 3 दिन का वो बैंडेज खोल के आवर सब ठीक ठाक क्लीन करने के बाद उसको आवर टेपिंग करना है. सर ये पर्टिकुलर कैलकाटा का बात बोल रहा हूँ, इसमें कुछ लेज़र कटिंग भी आता है क्या? Laser cutting is there, but in Calcutta there will be no laser cutting. There will be no laser cutting. Only surgery. Only surgery. Only surgery. Some person from maybe, but in Calcutta there will be only surgery. Only surgery. और सर ये जो and it is माने you are surprised that those people top the ear, they are not doctors. Yeah. They are trained by himself or some others. और मान लो कोई अगर न्यू डॉग ओनर ईयर क्रॉपिंग कराना चाहे तो वो सूटेबल कितना एज में कराना जरूरी है? From 2 months to 2.5 months. 2 months to 2.5 months. 2 months, 2.5 months. 2.5 months में भीतर करना है. तो इससे अगर ज़्यादा हो जाए? ज़्यादा होगा डेफिनेटली होगा. 3.5 मास में 3.5-4 मास में हो रहा है, लेकिन बेटर है, उसमें दर्द कम हो रहा है. और पर्टिकुलर अगर कोई नहीं कराएगा तो वो अगर शो अटेंड करेगा तो उसका कुछ that is the eye soothing and nothing. If you have a good conformation in Doberman, and you have your Doberman has a pendulous ear, there will be no problem. If it is a good reach, good conformation, he or she will win, definitely win. और सर आप जब जाज करने कोई शो में जा रहे हो, अगर पर्टिकुलर मैं डोबरमैन का ही बात कर रहा हूँ, तो आप लोग डोबरमैन में क्या देखते हो कि ये फास्ट है, ये सेकंड है, ये आप क्या देख के डिसाइड करते हो? फ्रॉम टीथ टू टेल, फ्रॉम सीजर बाइट, एनी मिसिंग टीथ, हाउ इज द नेक, proportion of the body. माने डोबरमैन शुड बी प्रोपोर्शनेट. मेल डोबरमैन शुड बी स्क्वायर, and the reach, the shoulder, the upper arm, the angulation of upper arm and shoulder belt, there will be movement in a single line. They are not in a not trotting like a wave. They are just like a single line, and good reach. Ground coverage is one of the best. If a Doberman is anatomically perfect, his or her reach is something different from others. Okay. And इसका कुछ टेल सेटिंग का कुछ there are if a tail is just like that, it's a gay tail. If a tail is just in that way, that is suppose 60 degree, that is a good tail setting. There is a low tail setting, high tail setting. There are lot of things are there. तो इसमें क्या दिक्कत आता है? मतलब आप लोग का क्या उसमें जजिंग में क्या? जजिंग में जो होता है, जजिंग में if you have a two type of same Doberman, conformation is right, but the tail setting is something that is gay tail and otherwise correct tail. Then you have to, as a judge, you have to give the preference of the right tail. Okay. And पर्टिकुलर डोबरमैन को कितना टाइम, मतलब दिन में कितना टाइम उसको वर्कआउट कराना ही चाहिए?
In puppy, there will be some adjustment with you. After that, you have to give him 1.5 hours regarding training, regarding exercise. Suppose if you want to give 3 days swimming, okay, good. Suppose 1 day for cycle trotting, 2 days for throwing ball, collecting ball. That is, everything is involved. It's a laborious job. It's not a thing that you touch and it turns a gold. If you give a definitely hard labor, and the Doberman will show their pride. एंड ये जो शो होता है, शो में आपका गवर्नमेंट का तो परफॉर्मेंस जरूरी है, लेकिन जो शो मतलब डॉग ट्रेनर है उसका कितना एफर्ट उसका होना चाहिए शो में? Definitely, the handler should have an eye in which position I stand the dog that will suppress his weakness and bright his the plus point. That is the one thing. And the attachment with the dog is a vital. If he or she is a good handler, the attachment is a very vital thing. और सर शो में जब आप लोग जांच करते हो, कोई डॉग अगर जब उसका शो करने के टाइम में अगर एग्रेशन दिखा देते हैं तो आप लोग बहुत टाइम देखा जाए डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो डॉग। हाँ, डिस्क्वालीफाई होता है। इन पेट शो वी गिव सम टाइम, सपोज इज ए नोविस ओनर, नोविस हैंडलर, ओके, यू विल डू इन दिस वे, यू विल काम योर डॉग. I sometimes give time. Okay, calm the dog, show the teeth in this way. But the aggression is not at all at all required. ये जो सर KCI में जो शो होता है, ठीक है, तो ये जो शो आपका शो जो टाइमिंग है आपका ये ग्राउंड में ही होता है, ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि मान लो आप 10 बजे डॉग लेके आप ग्राउंड में पहुंच गए, आपका नंबर कब आएगा आपको मालूम नहीं, 2 घंटा बाद आ सकता है सर, 5 घंटे बाद भी आ सकता है, लेकिन सर एक डॉग को वो धूप में वो वहाँ पे रखना, ये करना, ये एक तो आपको क्या लगता है इसमें? ये आपका बात सही है. माने इन फॉरेन there will be show in indoor show, but in India few shows will be held in indoor, and that's why we are showing in winter, that we do not have any space. We used to only the season winter, but in foreign countries there will be yearly show, there is full of year. ओके सर. और सर लास्ट क्वेश्चन है, एक डोबरमैन को लॉन्ग टाइम, मतलब मान लो एक डॉग या पपी आप घर में ले आ रहे हो, उसके साथ 10 साल 12 साल या 14 साल का एक अटैचमेंट रहता है, एज ए फैमिली मेम्बर बन जाता है, तो वो डॉग इन फ्यूचर अच्छे से आपके साथ रहे, कोई उसका दिक्कत ना आए, ये मतलब अगर कैसे उसको रखेगा, व्यूअर जो देख रहा है ये वीडियो, उसको आप थोड़ा नॉलेज आप अपना शेयर करो सर. First, you take a healthy puppy. Then there is a suppose deworming. Every month he or she should be dewormed. Healthy food is required, and attention, caring, just like a child, more than a child. Every vaccination should be completed. After that, when he or she is growing, you should take to socialize her with others. Then give him or her some exercise. Day by day, exercise should be increased, and in that way, his or her calorie is burning, and you will get a good domesticated Doberman. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉग इज लाइफ को टाइम देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपका डॉग और भी नाम कमाए, और भी आपका ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम सबका जो डोबरमैन लवर है उसके पास पहुँचे. तो बहुत बहुत सर धन्यवाद. Thank you.